हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें आज हम बात करेंगे डिफरेंट एंगल्स की, डिफरेंट लाइंस की। और ये we will start geometry of the class 7th today, or I hope you will learn new things, get your all concepts clear, and will do fun and exercise in this वीडियो। सो मेक श्योर आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें बिना स्किप किए, सो दैट यू गेट समथिंग न्यू टू लर्न अबाउट। और आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचाना मेरा मिशन है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। एंड सब्सक्राइब टू आवर फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी विल कवर टुडे। वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर लाइन, line segment and ray. Then what are angles? Then we will learn about parallel lines and transversal, the intersecting lines and the angles that they make. What are the complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, linear angles and intersecting lines and opposite angles. और इस तरीके से ये ढेर सारे angles और how the line may form angles, ये सब जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वी नो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द एंगल्स एंड द लाइंस। सो हियर इट इज, वी हैव दिस एज लाइन, बोथ द एंड्स एक्सटेंड एनीवेयर। रे, वन एंड इज दिस वन स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेट एंड एंडलेस इन द अदर डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट, part of a line that is specially in between two different definite segments. Okay, so this is a line. If we take a point and draw a straight path, extend endlessly on the both side, then the straight path is called line. Line segment, a line segment is part of line with two endpoints. Ray is the part of line with one endpoint and another is endless. Clear? ये भी हम लोग रिवाइज किए। Now the parallel lines. Two similar lines were going in one direction that do not meet anywhere. Here, these are the two lines that they are going in one direction, and also they do not meet each other at any point at an equal gap. देखो, they are at an equal gap. That is why they are known as parallel lines. Transversal lines. The transversal is the line that intersect two or more lines at different point. We have these two lines, they are parallel, they may be unparalleled. And this third line here, this is the transversal line. This is the line that intersects one or more. Here it is intersecting two lines at different points. See, at different point it is intersecting and it is making these 8 angles. So now what is an angle? The angle is formed by two rays originating from same endpoint. These can be said as two rays with the same endpoint or the same starting point. That is why it is making an angle here at this joint, and this joint is known as vertex. The rays making an angle are called arms of angle. These two are the arms of angle, and the end of the joint or the starting point is known as the vertex. Clear? The degree is the angle, this point is vertex, and these both are the arms of the angle. समझ आया? चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। अलग अलग टाइप्स ऑफ एंगल्स that is formed by a transversal that intersect two lines at different points. हमने भी ट्रांसवर्सल जाना, तो इट इज मेकिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप इस फिगर को देखो, आपको नहीं लग रहा वन के करस्पॉन्डिंग, वन इधर 1 2 3 4 में ऊपर है, इस साइड इधर 5 6 7 8 में 5 ऊपर है, तो इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। देन एंगल 7, एंगल 3,
एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, मतलब जो जिस प्लेस पे है, सेम प्लेस पे जो आ रहा है नेक्स्ट वाला लाइन में, दैट इज हाउ वी से देम दैट दे आर करस्पॉन्डिंग. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर, पहले इंटीरियर देखो, इंटीरियर यानी ये 3, 4, 5, 6, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट मतलब अपोजिट्स, 3 का 6, 5 का 4. क्लियर. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पहले बताओ. यस, 1, 2, 7, 8. अल्टरनेट विल बी 1 and 8, 2 and 7. क्लियर है कैसे यहाँ पे अल्टरनेट निकाला. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मीन्स 3 and 5, 4 and 6. क्लियर था. इंटीरियर एंगल सबसे पहले 3, 5, 4, 6 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो आ रहा है. Now, when these two lines that the transversal is intersecting are parallel, when these are parallel lines and transversal is intersecting them, then what happens? We have again the same 8 angles, but this time we can say that the corresponding angles 1 and 5, 3 and 7, 2 and 6, 4 and 8, these are equal to each other. 1 is equal to 5, 3 is equal to 7, 2 is equal to 6, 4 is equal to 8. The corresponding angles will always be same if the lines are the parallel ones. If they are not same, then means कि line आपकी parallel नहीं है. And if again, because we are now learning about the parallel one, कि ऐसा वाला केस जिसमें ये दो लाइन parallel हो, तब alternate interior angles. Alternate interior angles कौन है? 3 and 6, 4 and 5. So 3 is equal to 6, 4 is equal to 5. The alternate interior angles are also equal. अगर आपकी parallel lines हैं और transversal इनको intersect कर रहा है, then the corresponding angles will be equal. Alternate interior angles will also be equal. And now one more thing. If you add two interior angles on the same side of the transversal, क्या है? 3, 5, 4, 6. If you add these 3 and 5, 4 and 6, you will get the answer as 180 degree. आप इसको ऐड करोगे, angle 3 to the angle 5, you will get the result as 180 degree. Why? Because angle 5 is equal to angle 1 और angle 1 और angle 3 will be making a 180 degree ना here. तो इसलिए angle 3 और angle 5 भी मिला करके it will be 180 degree. So how to know lines are parallel? If transversal interact two lines such that the pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel. हमने क्या कहा था अभी बात की थी, टू पैरेलल लाइंस हैं या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर हमारे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, या फिर इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट इज 3 is equal to 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल है, या फिर और द थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ा, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सम इज 180 डिग्री. अगर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री है. तीनों कंडीशन अभी हमने लास्ट में पढ़ी कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट, वी कैन से बाय द एंगल्स दैट द corresponding angles are equal, the alternate interior angles are also equal, and the interior angles on the same side when added gives 180 degree. अगर ये तीनों चीज उसमें कोई भी एक चीज होती है, then we can say that these two lines are parallel. Clear? Now let us learn about the complementary angles. What are the complementary angles? The two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. ऐसे दो angles जिनका sum 90 degree, like here it is 50 and 40 degree. 50 and 40 को add किया we get 90 degree. So it is, these two angles are complementary.
Now supplementary angles, the two angles whose sum is 180 degree is called supplementary. अभी हमने बात की दो एंगल को जब जोड़ा we get 90 degree, then the sum is 90 degree, तो वो complementary है. If the sum is 180 degree, then वो supplementary angles है. Like here 110 plus 70 degree, we get it as 180 degree. So it is the supplementary angle. Clear? Complementary और supplementary समझ आए? याद रहेगा. So now let us learn about the adjacent angles. Adjacent angles are the two angles if they have common vertex, one common arm, and their non-common are on different side of the common arm. तीन condition है adjacent angles जानने के लिए. When the two angles are adjacent when they have a common vertex and a common arm. ये सेंटर आर्म देखो, ये इन दोनों एंगल का एंगल DBC और एंगल ABD का ये BD is the common arm, और बाकी दोनों the non common arms are on the different side of the common arm. क्लियर समझ आया? BC BD के इस साइड है तो BA उस साइड है, अपोजिट डायरेक्शंस में, और हमारा कॉमन वर्टेक्स है एक, और एक हमारी एक कॉमन आर्म है. तब ये हमारा ये दोनों एंगल भी ABD एंड DBC इज द एडजेसेंट एंगल्स. लीनियर एंगल, द पेयर ऑफ एंगल दैट मेक्स द सम एज 180 डिग्री. लीनियर एंगल क्या है? वही द पेयर ऑफ सम एंगल्स जिनको ऐड करने पे यू गेट 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री इज नोन एज लीनियर एंगल. Okay. Now the vertically opposite angles. See, these two lines are intersecting each other like an X. एक X बना रहा है. तो vertically opposite क्या है? Angle A और angle C. See, they both are on opposite and B and D. Vertically opposite angles are formed when two straight lines intersect at a common point. And vertically opposite angles are equal. That is, A is equal to C and B is equal to D. Clear? चलिए अभी करते हैं एक छोटी एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड इट बेटर. जो भी हम लोगों ने सीखा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. हमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए. एक एंगल पता है, दूसरा एंगल जानना. कैसे जानेंगे? वी नो द एंगल इज 20 डिग्री. 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री वी विल फाइंड बाय जस्ट given angle is 20, the whole sum must be 90. So let unknown be the x degree. So we get x plus 20, that is 90. So that means x is equal to 90 minus 20, that is 70 degree. Clear? इसका complementary we got 70 degree. Now 105 degree इसका supplement. Supplement आप कैसे find out करोगे? Supplementary angles are those that gives the sum as 180 degree. So that is why we can say that let the unknown be x degree again. So x plus 105 is equal to 180. That is, x is equal to 180 minus 105. That is 75 degree. We got the supplement as 75 degree. Clear है? अभी इनका सॉल्व करो. We have to get the supplement of each of the following. कैसे find out करोगे? Yes, 180 degree minus 87. You will get the answer here, and 180 degree minus 154, you will get the answer of further this side. Clear है? समझ आया? Now identify which pair of following angles are complementary or supplementary. 65 and 115 जानने के लिए क्या करोगे? You just add it up. Add it up and you got 180 degree. तो आपको क्या हुआ? ये कौन से एंगल्स हुए? Supplementary. The next 63 and 27. Add it up. What you will get? You will get 90 degree. So that is why they are complementary. These ones 112 and 68. Quickly add these two ones. What you will get? 180 degree. Yes. And this is a supplementary. Clear? कैसे निकाला supplementary? कैसे निकाला complementary? अब तो easily याद हो गया होगा. I hope you are enjoying this video and learning something new. और या फिर आपका कोई अच्छा कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है तो मेक श्योर आप
हमारे इस चैनल को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। नाउ let us find the angle which are equal to their complement. Means let the angle be x degree. We don't know the angle. Angle क्या है? Equal to the complement means both the angles will be x. So the sum of both the angles have to be 90 degree to be complement. That is x plus x is equal to 90 degree. Again 2x we can say x plus x 2x. 2x is equal to 90 degree. So x will be 90 by 2. And x is equal to divide करके क्या आया 45 degree. Yes, so the angle required is 45 degree. The same angles giving the complement. अच्छा वैसे ही आप same angle giving the supplement ढूंढ सकते हो. What it will be? Yes, it will be 90 degree. You can try it out in the same way जैसे भी हम लोगों ने complement निकाला. Now can two angles be supplementary if both of them are acute? क्या ये हो सकता है? तो नहीं. Two angles both are acute, which means less than 90 degree. Then they cannot be supplementary because their sum will always be equal either or less than 90 degree. Obtuse. Now, if both the angles are obtuse, that means more than 90 degree, they cannot be supplementary because their sum will always be more than 180 degree. We have 100 degree, 100 degree. It will be 200 degree. That is more than 180 degree. So obtuse में आपका कभी भी वो supplementary angles नहीं हो सकते. Right angles? Yes, it can be because both are 90 degree and both the sum will be supplementary pair. अभी आपने अगर आपने लास्ट वाले क्वेश्चन को supplementary में आप उसको ट्राई करोगे तो आपका आंसर तो आया होगा 90 डिग्री और 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल. ठीक, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई. चलिए अब हमें क्या फिगर मिला है. यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारी लाइंस हैं. सो वी कैन से वी आर आस्क्ड कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. वी हैव एंगल 2 हियर एंड एंगल 1 हियर. AOC COE. So we have one common center, one common arm. The uncommon are on the both the sides of this common one. So ये तीनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी. So इस वजह से yes, it is the adjacent angles. AOC adjacent to AOE. AOC AOE. Are they adjacent? No, because they are having the same. They are having one common arm. But the third property is not matching. Both the uncommon arms are on the same side of the common ones. So they are not adjacent. Clear? हमने यही पढ़ा था. तीनों प्रॉपर्टी अगर होगी, तीनों में से एक नहीं, अगर तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तभी we can say that these both are the adjacent angles. BOD and DOA are supplementary. We have, where is BOD? Find out BOD and DOA are supplementary. 4 and 5. Yes, you can say because it is a straight line making here, so it is supplementary. Angle 1 is vertically opposite to angle 4. Again see two lines making X, AOB and DOC. This is making an X here और इसलिए vertically opposite angle is angle 1 and angle 4. और you can also यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं कि 2 और 3 इधर दिख रहा है, add it up is equal to 5. मतलब COB is equal to AOD. COB की वैल्यू क्या है? 2 plus 3 और AOB भी 5 है. So these both are also equal and 1 and 4 are also equal, vertically opposite angle. Clear? चलिए अब हमारे पास एक दूसरा फिगर है जिसमें हमें इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे? एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2 plus 3 and angle 5. Linear pair 4 and 5. And 1 and 5.
लीनियर पेयर मतलब उनको पेयर है ना, तुम ये नहीं कह सकते कि 1 + 2 + 3, नो, वो तो ज्यादा होगा। पेयर यानी 2 एंगल्स होने चाहिए, तो इसीलिए 4, 5 एंड 1 and 5। क्लियर है? आप भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए अभी हमारे को क्या है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे और ये हमें एक फिगर मिला है। दीज टू लाइन्स intersected by two transversals, so making these 8 angles. So let us see, if A is parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5. Is it true? By which statement it is true? Which property? Corresponding angles. Angle 4 is equal to angle 6, interior alternate angles. Angle 4 + 5 is equal to 180 degree. Interior angles on the same side. ये तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी तीनों प्रॉपर्टी में यहाँ शो हो रही है। क्लियर? अभी क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if L is parallel to M। हमें यहाँ पे एक फिगर मिला है, L, this is M line और D is the transversal. So here it is 110 degree and this is the x degree. We have to find the value of x. यहाँ आपको कोई प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है? नहीं। So let us assume the angle on line M be y. This one, let it be y. So by corresponding angle, it is the what it is? It is the by corresponding angle property ये equal होगा. So it is 110 degree. And now you can see this is a straight line. So and due to property of next, that is supplementary angles, 110 plus x is equal to 180 degree and solve it. You get 70 degree as the answer. होप आपको x की वैल्यू समझ आई। ऐसे तरीके के आप x और भी निकाल सकते हो। So here again L is parallel to M and N is the transversal and we have to figure out कि L is parallel to M है कि नहीं। फिगर में तो दिख रहा है, but we have to figure out कैसे। We have to prove it, and here we have let the L and N be two lines and N is the transversal intersecting L and M and making an angle, interior angle of 126 and 44 degree on the same side of the transversal. So on the same side of the transversal, ये वाली प्रॉपर्टी अभी सुनी हुई थी, क्या था इसका? The sum of interior angles on the same side of the transversal must be 180 degree. So we have ये वाले दोनों angles, just add those up. If it is 180 degree, then ये parallel होंगे? No. Here you can see the answer is 170 degree. That is means these both lines are not parallel. I hope आपको ये सारी concepts, ये सारी चीजें, ये सारे proofs सब कुछ समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और इस वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दे ऑल्सो गेट टू लर्न समथिंग न्यू इन अ फन वे। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेसन।